Hello everyone, welcome to economics class. Today we will discuss about the second part of textual and tabular presentation. Dear students, in the previous video we discussed about the textual presentation, that is the presentation in terms of paragraphs, sentences or text supported with numerical information or numerical data. Now, the tabular presentation means the presentation in terms of rows and datas, rows and columns. We have already studied about this very concept. Let's start the next topic. This is features or guidelines of a good table. In the previous video, we discussed about the components of a good table. Components of a table. There are 8 components of a table. The very first one, this is related with table number. Second is title. Third is head note. Fourth is stubs. Fifth is captions. Sixth is body or field. Seventh is footnote. And eighth is source. Along with these 8 components, a good table must consist of few more features. Let's discuss about these features. The very first one, title, as we have already discussed, it should be compatible with the objective of the study and must be written in the top center of the table. It must be capable to provide the necessary information about which the table belongs to. The second one, this is the comparison. The items which are to be compared with each other should be placed in rows and columns क्लोज टू ईच अदर. जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द फॉर्मेट में हमने एक रफ स्केच भी बनाया था और रफ स्केच में मैंने आपको बॉडी और फील्ड के बारे में बताया था कि कैसे हम डाटा को वहाँ प्लेस करते हैं जिसको हमें कंपेयर करना होता है. तो द फर्स्ट वन, टाइटल मस्ट बी कंपैटिबल एंड द सेकेंड वन, इट मस्ट बी कंपेरेबल. द थर्ड वन, special emphasis. Items in a table which need special emphasis should be placed in head rows, that is the top above, or head columns. Such items should be presented in bold figures. जैसे हम stubs और columns बनाते हैं तो हमें उनके बारे में properly mention करने की ज़रूरत है. Means हमें special emphasis देने की ज़रूरत है. हम stubs या row headings और captions या कॉलम हेडिंग्स को भी प्रॉपरली बनाएं. नेक्स्ट, दिस इज आइडियल साइज. टेबल मस्ट बी ऑफ एन आइडियल साइज. इट शुड नॉट बी टू स्मॉल, इट शुड नॉट बी टू लार्ज. ऐसी हो जिसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी कर सकें, कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रह भी नहीं जाए, प्रॉपरली कवर अप हो जाए सारी के सारी इन्फॉर्मेशन. देन दिस इज़ अबाउट द स्टब्स. अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया. देन यूज़ ऑफ ज़ीरो. कई बार क्या होता है कि हम ज़ीरो को नॉन अवेलेबिलिटी के लिए यूज़ कर लेते हैं. अगर किसी चीज़ का डाटा हमारे पास नहीं है तो हम उसमें ज़ीरो फिल कर देते हैं. ये गलत है. ज़ीरो का मतलब ज़ीरो से ही होना चाहिए. मतलब जैसे न्यूमरल होता है ज़ीरो, तो ज़ीरो को हमें ज़ीरो की फॉर्म में ही लेना चाहिए. नॉन अवेलेबिलिटी के लिए हमें NA या नील वर्ड लिख देना चाहिए. नॉन अवेलेबिलिटी के लिए NA वर्ड हमें लिखना चाहिए. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ. हमारा जो रिज़ल्ट है वो सॉफ्टवेयर में तैयार होता है अपने DAV स्कूल का. अब इसमें क्या इशू होता है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई पेपर नहीं देता तो हम वहाँ पर एब्सेंट मार्क नहीं कर पाते. हमें वहाँ हमारा सॉफ्टवेयर ज़ीरो उठाता है. ये गलत है. मीन्स ज़ीरो को हम एब्सेंट की जगह पर रिप्लेस ना करें. ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही होना चाहिए. So, 0 should only be used to indicate the quantity of the variable. It should not be used to indicate the non-availability of data. If the data are not available, then it should be indicated by NA or minus sign. Got it, beta? Next, headings. We have already discussed about the term headings. Same way, abbreviations. Abbreviation should be avoided in the heading और सब हेडिंग्स ऑफ अ टेबल. एब्रीविएशन को अवॉइड करना चाहिए टेबल में. जैसे अगर मैं PM के बारे में बात करूं तो PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर भी होता है. PM का मतलब प्रणब मुखर्जी भी होता है.
PM का मतलब प्रमोद मेहता भी होता है, तो एब्रीवेशन जो है ना वो कंफ्यूज करती हैं, इसलिए a good table must not contain abbreviations at all. Next, this is about the footnote. Footnote should be given only if needed. मैंने आपको पहले भी बताया था. No doubt, footnote is the seventh component of a table, but it can be avoided if not required. Units may be specified above the column. हम परसेंटेज में ले रहे हैं या एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में ले रहे हैं, 1000 टर्न्स में ले रहे हैं, ओनली टर्न्स में ले रहे हैं, तो यूनिट्स मस्ट बी मैंशन. नेक्स्ट, टोटल. आपको याद होगा मैंने आपको टेबल कराई थी, तो वहाँ मैंने लास्ट में एक स्टेप बनाया था टोटल. टोटल का मतलब सम टोटल ऑफ द बॉडी और फील्ड. आगे हम और आज टेबल्स के एग्जाम्पल करेंगे, हम वहाँ भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फुटनोट should be there if required. Units may be specified above the columns. Total in the table. Subtotal of the items must be given at the end of each row. Grand total of the items must also be noted. Then percentage and ratio. Percentage figures should be provided in the table if possible. This makes the data more informative. अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो परसेंटेज में हमें करना चाहिए, इससे ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है. फिगर्स बहुत बड़े बड़े याद नहीं रहते, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 70% लोगों का ये इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे याद हो जाएगा. जैसे आज हम कोविड के टाइम में हम डिस्कस करें तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो अराउंड 9% है. ये पॉजिटिविटी रेट एक टाइम ऐसा आया था जब अप्रॉक्सीमेटली 30% हो गई थी. तो अब हम परसेंटेज की टर्म में याद करना हमें बहुत आसान है. जैसे आज के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मोर देन 45,000 लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें से 3753 पॉजिटिव आए हैं. तो फिगर्स याद नहीं रह रहे, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं याद रहेंगी, लेकिन अगर परसेंटेज है या रेशियो की फॉर्म में है तो वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा. देन एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन. हाउ मच approximation level is used in the table, it must be clearly mentioned, because we have already discussed that the level or the level of approximation describes the reliability of the data. So कितना हम approximation ले रहे हैं इस पर हमारे डाटा की reliability डिपेंड करती है. So how much approximation, how much of figures are based on approximation, it must be written in the table. Now, source of data, we have already discussed about the concept. Source of data must be there if we are using the secondary data. Size of columns must be uniform and symmetrical. It will make the table more attractive. Ruling of columns. Columns must be divided into different sections according to similarities of the data. Again, हम जब उसको स्केल यूज़ करेंगे, प्रॉपरली डिवीज़न करेंगे, यूनिफॉर्मिटी रखेंगे, तो टेबल जो है वो अट्रैक्टिव भी रहेगी, इकोनॉमिकल भी रहेगी और उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होगा. देन सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव. प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम, और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मस्ट बी अट्रैक्टिव. इफ अ process is to be made effective, long lasting, it must be economical, it must be attractive. Got it beta? So all these are the guidelines. सारी की सारी आपको अंडरस्टैंड करनी है. नॉर्मली पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है, एनलिस्ट द गाइडलाइंस ऑफ अ गुड टेबल. बच्चे ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पर लिखना है, एनलिस्ट द गाइडलाइंस ऑफ अ गुड टेबल. क्लियर? नेक्स्ट, this is about the kinds of table. On the basis of purpose, we will discuss about 4 points. The very first one, according to purpose. If according to purpose, the tables can be formed on the basis of the purpose. Sometimes we have only the general purpose, sometimes we have the specific purpose. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका स्कूल रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वो एक जनरल पर्पस के लिए होता है. जैसे उसमें हम काफ़ी कुछ नोट करते हैं कि अगर आपकी कोई किसी मेडिसिन से आपको कोई एलर्जी है
या आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, इस तरह से आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में उसमें रिपोर्ट ली जाती है। वो रिपोर्ट एज इट इज़ रिकॉर्ड में पड़ा रहता है, अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम उसको कभी नहीं निकालेंगे। मीन्स जनरल इंफॉर्मेशन। व्हेन द टेबल इज़ मेड on the basis of general information, that is on the basis of general purpose, this type of table is known as general purpose table. But if we have some specific purposes, आपके मार्क्स का डिटेल चाहिए था, फ़ोन नंबर्स की डिटेल चाहिए थी, ईमेल्स की डिटेल चाहिए थी, तो अब हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्पस आ गया। व्हेन द डाटा इज़ प्रेजेंटेड in terms of some specific purposes in the form of table, it is known as specific purpose table. Now move to the second. According to originality. According to originality, it may be original table, it may be derived table. Original table means when the data is presented in the same manner in which it is collected. अगर आपके मार्क्स 80 में से कलेक्ट किए गए हैं और एज इट इज़ उसको टेबल में प्रेजेंट कर दिया जाए, इट विल बी एन ओरिजिनल टेबल। लेकिन अगर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें और उस परसेंटेज को हम टेबल में प्रेजेंट करें, इट विल बिकम अ ड्राइव्ड टेबल। अ ड्राइव्ड टेबल इज दैट in which data are not presented in the form or manner in which these are collected. Instead, the data are presented after converting data into ratios and percentage. अभी मैंने आपको बताया आपके 80 में से जितने मार्क्स हैं वो सब मैंने कलेक्ट कर लिए, वो तो मेरी बन जाएगी ओरिजिनल टेबल, एज इट इज़ मैंने उसको प्रेजेंट कर दिया। लेकिन उसको अगर मैं परसेंटेज में ले रही हूँ या रेशियोज में ले रही हूँ, देन इट विल बिकम ड्राइव टेबल। नाउ मूव टू द थर्ड वन, table according to construction. The very first one is simple or one-way table. This is the table in which only one feature or one character is shown. For example, it is class and the number of students. Mean number of students in different classes. ये सिर्फ एक character को show कर रहा है. That's why it is a simple or one-way table. Now, this is about the complex table. Complex table is one which shows more than one characteristics of data. It is further divided into double or two ways table, treble table, manifold table. It is clear double or two way table means when two characteristics are simultaneously shown by a table. Treble table when three characteristics are shown in simultaneously in a table. Then manifold when more than three characteristics or features are shown simultaneously, it will become manifold table. Let's have some examples. This is an example of double or two-way table. This table is indicating number of students as well as gender of students in different classes, means classes and gender of the students. In 11th standard, total students are 200, out of which 160 boys, 40 girls. It means it shows two characteristics. That's why it is double or two-way table. Now, this is the treble table which shows three characteristics. It is clear from the table that along with class, boys and girls, that is the gender, and the residential status is also shown in this table. So three characteristics are class, gender, and residential residential status are shown. That's why it is showing three characteristics. Now this is the manifold table. Manifold table is a table which shows more than three characteristics. In this very table, four characteristics are class, then gender, residential status, then the married or unmarried. Okay, this is a marital status. So four characteristics are shown. That's why it is a manifold table. Clear, beta? Now move to the next. So kinds of table we have discussed three concepts. One is the according to purpose. Second is according to originality. Third is according to construction, that is simple and complex. Complex is further divided into three categories. Got it, beta? Now move to the next topic. This is about the classification of data and tabular presentation. How tables are constructed
on the basis of different groups or on the basis of different classes or classification. As we have already discussed in the previous chapter, classification may be on the basis of attributes or the characteristics. So, qualitative classification. When tables are constructed showing qualitative attributes or characteristics, then this is known as qualitative tabular presentation, like male and female, rural and urban, etc. Quantitative classification, when data is classified on the basis of the quantitative characteristics, like division of a class on the basis of marks obtained in statistics. And if we draw a table, we present the information in rows and columns on the basis of quantity, like column shows different classes or section A, section B, so and so, on the basis of the marks obtained by the students. Then it will become the table on the basis of quantitative phenomena or quantitative classification. Then this is the temporal classification. When tables are constructed on the basis of time period, as we have already discussed about the temporal classification, this is the classification which is based on time period. So when tables are constructed showing different time periods, it will become temporal classification. Then spatial classification means the locational or geographical classification. When tables are constructed showing areas or locations, then this type of tabulation becomes spatial classification. मैंने इन सब का एग्जाम्पल आपको क्लासिफिकेशन के चैप्टर में, उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर समझाए थे बहुत अच्छे से. अगर हम कोविड केसेस के बारे में बात करें, केरला में कितने आए हैं, हरियाणा में कितने हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, और एक साइड हम लिख रहे हैं एरिया, दैट इज़ द स्टेट, और दूसरी साइड हम लिख रहे हैं कोविड पेशेंट्स, तो ये बन जाएगा बिकॉज द टेबल is now on the basis of area. That's why this is spatial classification. Got it, beta? Now move to the next. This is about the merits of tabular presentation. It must be simple and brief. ये इसका सबसे important feature भी है और merit भी है. बहुत बड़े डाटा को ये सिर्फ 4-5 sentences में ही convert कर देती है. इसी तरह से facilitates comparison because body is there. हम यहाँ पर अभी डिस्कस करके आए हैं कि जिसको हमें कंपेयर करना होता है उसको हम स्पेशल एम्फेसिस भी देते हैं और काफ़ी क्लोज हम उसको रख लेते हैं ताकि उसको कंपेयर कर सकें. सो इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन. इजी टू एनालाइज बिकॉज इट इज़ ईजी टू कंपेयर, it is easy to make comparison, and that's why it is very easy to analyze. Because it is very easy to analyze, that's why it is very easy to interpret through tabular presentation. Then highlights characteristics of data, because in tabulation we can divide the data on the basis of the characteristics, as we have just studied about the classification of data in tabular presentation. That's why special emphasis can be given. Then economical, अभी हमने डिस्कस किया, इसके गाइडलाइंस में भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम टेबल बनाते हैं तो ये बहुत इकोनॉमिकल भी हो जाती है, कम स्पेस भी लेती है और अट्रैक्टिव भी होती है. बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को हम 3-4 या 5-6 सेंटेंसेस में, मीन्स हम 6 रोज में या 4 कॉलम्स में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उसको कवर अप कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल ऑल्सो. गॉट इट बेटा? नाउ व्हाट्स अबाउट योर होमवर्क? You are to do these questions in your fair notebooks. The very first one, the very first question, enlist the guidelines or features of a good questionnaire. Clear? आपको कम से कम 8 इसमें ज़रूर लर्न करनी है. देन काइंड्स ऑफ टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द टेबुलर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. तो आप आंसर दोगे जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, दोनों को डिफाइन करके दोनों की टेबल्स आप बना सकते हो. ऐसे ही आपके पास ओरिजिनल और ड्राइव टेबल के बारे में भी आ सकता है, या आप कह सकते हो हाउ टेबल्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी. इसी तरह से आपके पास सिंपल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल और वन वे टेबल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल और टू वे टेबल,
और गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैनी फोल्ड टेबल, इस तरह से करके आपका क्वेश्चन ये बन सकता है. नेक्स्ट आपके पास ये है, ये हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा and tabular presentation are related to each other, or you can say explain the tabular presentation on the basis of qualitative classification, on the basis of quantitative classification, on the basis of temporal classification, on the basis of spatial classification. You will have to give them with you will have to explain with the help of an example. Clear? Then the last one, merits of a tabular presentation. तो ये भी आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर लिखना है. सो विद दिस चैप्टर इज ओवर. सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, do your work properly, and please maintain your notebooks. Goodbye, dear students.